Sustainable Environment and Disaster Management Indian Perspective. This program started on 6th Feb. The various issues related to environment and natural disaster management have been discussed since last 15 days. We have a mixed group from science, social science, law, literature, humanity, etc. Actually, this program was started on 6th Feb, and the resource person gained a lot of knowledge about environmental issue, climate change, global warming, loss of biodiversity, deforestation, and about Indian knowledge system, our inherited knowledge which we use to save and protect our environment. So, since last 15 days, the participants have a lot of interaction with the source person about environment. As all we know, today environmental issue, the burning issue, and most important is climate change and global warming. How we should tackle, how should we literate our coming generation, and what is the responsibility and duty of our present generation to safeguard the environment. So, since last 15 days, we have a lot of experience of renowned scientists, academicians, and technicians throughout the India. We have resource person from various parts of India. Today, we have valedictory program of this 15 days refresher course. Dr. Shefali, Director of Human Resource Development Center, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Sudeshji, they landed today. They were in Nepal since last 1 week. They landed today. So, due to this late arrival in India, she is unable to join us. And Dr. Shefali is due to some emergent meeting. She will also not join us. So, today we, on the behalf of all the Vice Chancellor, Registrar, and Director, ma'am, I welcome you, sir, for this program. Now, I hand over the program to Dr. Meenakshi Daya. A very good noon to all of you. I am Dr. Meenakshi Daya from Government College Jasia, Department of English. जैसा कि हम सभी को पता है कि ये 15 days का जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स था, today we are here together for the valedictory function of our 2-week online refresher course in Sustainable Environment and Disaster Management, Indian Perspective, organized by UGC-HRDC-Bhagat Phool Singh, Mahila Vishwavidyalaya. Now, we have a participant, Dr. Joginder, who is going to share the first week report of the refresher course. Welcome, Joginder, sir. Thank you, Meenakshi ma'am. Please unmute your mic. Today, valedictory function distinguished guest Professor V.K. Sharma, Vice Chairman Sikkim State Disaster Management Authority, Government of Sikkim. Dr. Bhupender Singh, Chairperson Department of Chemistry, and our course coordinator Bhagat Phool Singh, Mahila Vishwavidyalaya, and my dear all participants, teachers, professors, researchers, and from the all faculties and different part of the country. I heartily welcome you, and first of all, I pay my gratitude towards our course coordinator, Dr. Bhupender Singh, who gave me a great opportunity to me to share my words and reported of the first week of the session. Distinguished guests, sir, I heartily welcome, and this is a very memorable course, and from the different part of the country, many enthusiast persons and all lovable persons which are memorable for us.
Sir, UGC Human Resource Development Center, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya conducted a refreshers course on the theme of sustainable environment and disaster management Indian perspective. This course provides an immense opportunity to make different aspects of the sustainability analytically reachable and more productive for future research. This refresher course is scheduled from 16 February 2024 to 19 February 2024. The report of the first week the course as assigned to me is, sir, first day in the morning there was inaugural session chaired by Chief Guest Professor V.K. Garg, former Dean of Department of Environmental Science and Technology, CUP. And this session is presided over by the Professor Sudesh Sikara, Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Sonipat. This session was hosted by Dr. Shefali Nagpal, Director UGC-HRDC, Dr. Bhupender Singh, Chairperson Department of Chemistry and Coordinator of this course, and Dr. Varuna, Department Director UGC-HRDC. Chief guest of this session, Professor V.K. Garg, gave lecture on the concept of the sustainable development. His lecture was very knowledgeable and inspirative. Professor V.K. Garg describes evolution of human being, fire, agriculture, industrial and artificial intelligence. This session was very informative and encouraged all the participants. Coordinator of the course paid vote of thanks to all the esteemed guests in evening session. Resource person Dr. Dipali Mathur gave lecture on the community participation and challenge in the environmental waste management. She explained from the theory to practical understanding, and she emphasized on the sensitization of the society regarding the environment. This was a great day and a very enthusiasm session. Second day, sir, 7th February 2024. In morning session, resource person was Dr. Manpreet Arora with the lecture on the research methodology. She well explained qualitative research, interdisciplinary aspects, and how and where a research paper is to be published. Especially, she gave attention on bibliometric analysis from the lecture. Participant was enriched in their research work. In evening session, Dr. Alka Bharti made a great effort on the topic of conservation of the biodiversity and inside sustainable development. Dr. Alka lighted development that fulfill the present need without the compromising the abilities of future generation and balance between economic development and conserving them for future generation. Third day, 8th February 2014, in morning session, resource person was Professor Dr. Rajesh Dhankad with the topic environmental awareness. In her lecture, she focused on the promotion of sustainable development. She pointed out some environmental issues like air pollution, effect of greenhouse gases, global warming, ozone layer depletion, climate change, water pollution, solid waste, and loss of biodiversity. In evening session, resource person was Dr. Hardeep Rai Sharma. His topic was solid waste management, challenge and solutions. Dr. Sharma gave technique, firstly, how to control and manage solid material, holder and produce of waste management, land filing method, and energy generation from solid waste. He also provided remedies to the eradicate the children associated with the some sentiments like Chipko movement and waste management recycling plants also. Fourth day, 9 February 2024, in morning session, resource person was Professor Dr. Meenal Misra with the topic Earth Science and its impact in our daily life. From her lecture, the participants received knowledge about Earth system and interrelation of atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere. In evening session, resource person Dr. Vinay Sethi with the topic of importance of the birds, particularly the house sparrow. Dr. Sethi emphasized the value of the birds in our life. He paid attention toward the
decreasing number of house sparrow. He also emphasized on the various factors and which are responsible for decreasing number of house sparrow goraya. Through the lecture, he appealed to save the house sparrow with the arrangement of nest for the house sparrow in our houses. Fifth day, 10th February 2024, in the morning session, resource person was Professor R. Bhaskar with the topic natural hazards and overview and management of the natural disaster. In his lecture, he explained the history of a geological science. He also emphasized, however, ecology is not always focused on the environment but on man. Practical application ecology includes conservation, biology, restoration, ecology, resource management, and wetland management. In the second topic, management of natural disasters, he explained what is disaster management, and how to prevent the disaster. In evening session, Professor Dr. Devendra Mohan gave 2 lectures on water pollution with prevalent toxin and food adulteration, some observations, and air pollution, some issues. In his lecture, Dr. Mohan described many factors which pollutes the water and air. He emphasized the adopt some measures to protect the water and air, particularly to protect our rivers, water, harvesting and natural treatment of drinking water. For the protection of air quality, he emphasized on the use of public transport and carpooling, switching off the lights when they are not in use, reusing and recycling products, avoiding the burning of garbage and smoking, and avoiding the issue of firecrackers. 6th day, 11th is Sunday holiday. We relax and get the re-energy. परम श्रद्धेय प्रदादरणीय प्रोफेसर शर्मा सर, आज आप हमारे बीच में हैं और मैं अपना फर्स्ट वीक की रिपोर्ट के साथ ही अपने सभी साथियों का, सभी सहृदय साथियों का बहुत ही प्यारे और जो इतने अच्छा अनुभव मेरा रहा है। मैं खासकर अपने जो कोऑर्डिनेटर थे इस कोर्स के, बहुत ही लवेबल पर्सन है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, और हम सभी उनसे इतने इंस्पायर हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए। उनके इतना मतलब जो हमारे लिए बहुत आत्म स्नेही और प्यार भरा जो रहा पूरा का पूरा वातावरण, और आदरणीय आप जैसी महान विभूति को हम अपने बीच में पाकर कृतार्थ हैं कि आज दीक्षांत से उसमें आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। और अपने पार्टिसिपेंटों को ये लाइन कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा और मीनाक्षी दहिया जी मैडम को पुनः मतलब करूंगा कि जो नज़रों से दूर होते हैं वो दिल के करीब होते हैं, और लोग जुदाई से के भी याद रखते हैं, लोग वास्तव में अजीब होते हैं। मेरे सभी सहृदय साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर वी.के. शर्मा, आपका अगेन बहुत बहुत कि आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जोगिंदर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ा ही वेल मैनर्ड आपने जो रिपोर्ट हमें दी। और जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सर के बारे में कहा, ये सही है सर कि सर ने हमें बहुत ही ज्यादा एक अच्छे से इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया और बड़ा ही वेल मैनेज जो हमें माहौल मिला, उसके लिए सर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और प्रोफेसर विनोद शर्मा सर, मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एंड नाउ हमारे एक और पार्टिसिपेंट डॉक्टर मनोरमा, नाउ शी इज गोइंग टू रीड द रिपोर्ट ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिस रिफ्रेशर कोर्स। मैडम मनोरमा। Madam Manorma, a very good afternoon to all and our respected distinguished guest, Professor Binod Kumar Sharma, Disaster Management Consultant and Vice Chairman of Sikkim State Disaster Management Authority, Government of Sikkim, and the coordinator of our refresher course, Sir Bhupender Singh, and all the delegates and faculty members from different institutions of our country who are participating in this refresher course. Then it's my privilege and for giving a great chance to be as a reporter of this second week of our refresher course. So now I'm going to give a brief report of this second week of this refresher course. The UGC Human Resource Development Center, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur,
Sonipat conducted a 2-week refresher course on the theme Sustainable Environment and Disaster Management, Indian Perspective. The course is provided a great opportunity to improve our productivity, performance, and efficiency for future outlook. The course is scheduled from 6th of February to 19th February, and the report of the second week of this course is reporting to you all on the day 7, that is 12 February 2024. In the morning session 1 and 2, Dr. Suresh Sanjan was the resource person on the topic Water Resources, its Crisis and Integrated Water Resource Management. And he highlighted about 40% of the world population live under water scarcity and its major factors. The participants received technical knowledge of the integration of structural and non-structural measures of water resource management. In the afternoon session 3, resource person Dr. Ms. Vinti Davar with the topic Diverse Plate, Secure Future, exploring nexus of food diversity and security. From her lecture, we can learn that the food security could be achieved by the 3 pillars: availability of food, access to food, and utilization of food. And in the session 4, we have a presentation session which is presided by our respected Sir Sunil Kumar as an evaluator. On day 8, that is on 13 February 2024, in the morning session 1 and 2, Dr. Manoj Zain lecture on the topic Green and Clean Energy. The participants learn about the sources, technologies, and application of green energy like solar, wind, hydro, solid waste, biomass, and biogas. In the afternoon session, the resource person was Dr. Vinti Davar, lecture on Unlocking Vitality, Explore the Power of Health and Nutrition. She focused that health and nutrition are correlated for growth and development, health and fitness, disease prevention, immunity boosting of the body, and adaptation in the prevailing environmental condition. In session 4, we have a presentation program of the participants. Dr. Krishan Kumar presided as an evaluator. On day 9, that is on 14 February 2024, in the morning session 1 and 2, Dr. S.D. Atri highlighted on the topic Climate Change and Management Strategies. The participants can receive knowledge on green technologies, energy efficiency improvement, then renewable and nuclear energy, carbon capture storage, and integration of scientific and traditional knowledge is the need for sustainable development. In the afternoon session 3 and 4, Dr. Bhagavan Singh Chaudhary lectured on 2 topics: geospatial technology for sustainability of water resources, Indian perspective, and geospatial technology for disaster management. Food dynamics in Haryana. He enlightened that geospatial technologies can effectively applicable in various aspects of integrated watershed land resources, inventory, land use planning, climate issues projection, sustainable agriculture, and introduction of smart water management system. On day 10, that is on 15 February 2024, in the morning session 1 and 2, the resource person was Dr. Balka Singh, talk on basic gardening. And we can receive more knowledge about the basic requirement and techniques of gardening, like selection of pots, soil, nutrients, pesticides, planting materials, and seeds and plants, etc. He enlightened us how to grow plants at our home at the simplest way and recommended various air purifying plants to mitigate air pollution. In the afternoon session 3, Dr. Abhishek Chandra presented on the topic Traditional Agriculture, a Climate Smart Approach for Sustainable Food Production. He described the significance of agrobiodiversity in terms of food, medicine, socio-ecological, and religious perspective. Traditional crop varieties are replaced by the high-yielding varieties to
introduce and new varieties of food. There is a need for political and positive behavioral change for restoring of agrobiodiversity. The session 4 was followed by Dr. Mahesh Sharma lectured on seasonal dynamics and adaptation. He explained it with the seasonal variation men should try to adapt with positive lifestyle for improving our health. It is analogous to Brahmanda, that is Prithvi, Jal, Teja, Vayu, Akasha, transform our mind and body into ethical and superior quality of life, resulting to extension of lifespan with the sustainability of environment. On day 11, that is on 16 February 2024, in the morning session 1, Dr. Pawan Kumar Gupta was a resource person and talked on environment and health. He pointed out our modern world is associated with various environmental degradation issues and affecting health. We should have yoga, balanced diet, proper sleep, meditation, and good conduct or positive attitude, so that our immunity could be increased with good health in the prevailing environmental condition. And in session 2, the resource person was Dr. Salini Atri with the topic Environment, Literary Texts, and Sustainability. From her lecture, the participants could learn about the theory of eco-criticism. Different writers like Vandana Shiva, Amitav Ghosh, and William Wordsworth were concerned more about the conservation of nature and biodiversity, advocating sustainable development to create our Mother Earth and eco-utopian model. In the afternoon session, Professor C.P. Kaushik was the resource person and addressing solid waste management in Indian context. He explained different types of waste, rule of solid waste treatment, and we can learn. We should emphasis on 5 R's, that is the refuse, reduce, reuse, recycle, and rejuvenate for sustainability. And he continued on climate change and its impact in the evening session. And he talks more about the phenomenon and impact of global air circulation, global warming, then El Nino, then melting of the permafrost, etc. On day 12, that is on 17 February 2024, in the morning session, Professor Benidhar Deshmukh was a resource person and lectured on coastal disaster management. He pointed out that integrated coastal zone management and decision support system should be developed by the integration of coastal ecosystem, water resources, land, forest resources, and disaster management information system in a holistic manner. So in the session 2, the participants, we have an examination. Then in session 3 and 4, Dr. Barun Narayan Mishra presented 2 lectures on role of Earth observation and GIS techniques in environmental monitoring and management, and role of GIS in environmental management. He explained the components and importance of remote sensing and geospatial technologies for gathering information, solving and data analysis of air pollution, climate change, water level, forest area, and geophysical structural changes, identification and abundance of natural resources, prediction of landslide, flood mapping, and mineral exploration, then urban planning, military defense, and strategies for natural resources and environmental management. So, I'm very thankful to our coordinator of this refresher course, Sir Bhupendra Singh, and the refresher course is very much effectively and successfully organized. And once again, a very thank you for giving me a chance to be a reporter. Then I think the theme for this refresher course, Sustainable Environment and Disaster Management in Indian Perspective, is very much relevant and in the present context. So I'm hoping that and expecting more such a course will be organized in the future also. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Manorma ma'am.
सेकेंड वीक की प्रेजेंटेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए. एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग अनदर पार्टिसिपेंट, डॉक्टर बीना रानी, for sharing the feedback about this refresher course and give your suggestions to HRDC. जी मैम. Meenakshi ma'am, जी please सर. ask to the people, please take 2 to 3 minutes. Okay, Sir, okay, it is very sir. Ma'am, please make it Please, yes. soon. Okay, ma'am. Thank you, Meenakshi ma'am, for giving me this opportunity to express some few words. A very good afternoon to everyone. Myself, Dr. R.K. Binarani Devi, Assistant Professor in Environmental Science, Manipur College, and I am from Manipur. As a participant of the program, refresher course on sustainable environment and disaster management, Indian perspective, organized by UGC Human Resource Development Center, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, Kalan, scheduled from 6 February 2024 to 19 February 2024. As a participant, I feel that the time spent on this training program has been very productive. The training sessions were very informative and helped us expand our knowledge. The effort that has been put into creating the material is very much appreciated. The speaker's knowledge of the subject matter was evident, and they did a good job of explaining concepts in a way that was easy to understand. The interactive discussions were also fruitful. Overall, it was a very successful training program. It was a pleasure to participate myself in the training sessions, and I would like to compliment everyone involved in creating such an effective training program. My best wishes and congratulations to Dr. Bhupendra Singh ji and all the organizers of this refresher course. Thank you, sir. Thank you very much, sir, and thank you all. Thank you, Bina Rani ma'am. और अब इसके बाद now let's move towards another participant, Madam Tanuja, for the feedback of the program. Ma'am Tanuja, please welcome. Yes, ma'am. Very good afternoon, everyone. Thank you, Mina. First of all, thank you, Meenakshi ma'am, for giving me such a chance to deliver my opinion on feedback. I'm Aribam Tanuja Devi, Assistant Professor, Lilong Hauribi College, Usoipopi, Manipur. It was my immense pleasure to participate in the refresher course on sustainable environment and disaster management, Indian perspective, organized by UGC Human Resource Development Center, BPS Mahila Vishwavidyalaya from 6 February to 2024 to 19 February today. Lectures given by the chief guest, Professor V.K. Gers, on the concept of sustainable development was very knowledgeable and inspirative. Resources person Dr. Dipali Mathur lecture on the community participation and challenges in the environmental waste management was very informative and knowledgeable too. On the second day lecture given by the Mr. Manpreet Arora on the research methodology, giving more attention on bibliometric analysis. Moreover, Dr. Alka Bharti effort on the topic of conservation of the biodiversity and insight sustainable development were very informative. Lecture by the Professor Dr. Rajesh Dhankar on environmental awareness focusing more on sustainable development were very interesting. Dr. Sharma topics on waste management and his technique and how to control and manage the solid waste were very informative also. From Professor Dr. Minal Mishra lecture, the participant received knowledge about the Earth system and interrelationship of atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. And the 10th day, and in the evening session, lecture given by the Dr. Devendra Mohan on the water pollution with prevalent toxin, food, the adulteration. He described many factors which pollute the water and air, particularly to protect our river, water harvesting, and natural treatment of drinking water. For perspective of air
quality, the emphasis on the use of public transport and carpooling, switching off the light when they are not in use, reusing and the free cycling products, avoiding the burning of the garbage and smoking, avoiding the uses of firecrackers. Overall, it was pleasure to participate in the training session, and I would like to compliment everyone involved in creating such effective training programs. And lastly, one more thing, there was no any technical issue occur in the whole session. Thank you very much. Thank you, Tanuja ma'am. I think there is one more participant who is willing to give his feedback about this refresher course. Welcome, Sanjoy sir. Sanjoy sir? Yes, yeah. Very good afternoon to all of you. It's me, Dr. Sanjoy from Imphal. So I'm respected Professor V.K. Samaji, respected Director UGC-HRDC, Dr. Sefali Ma'am, Deputy Director Dr. Baronazi, and Course Coordinator Dr. Bhupinder Sarji, and my dear colleagues. So today I would like to express a few words from the deep core of my heart. First of all, I would like to thank our brilliant director, Sefali Nagpalji, and our able coordinator and my senior, Dr. Bhupinder Sarji. During my MSc also, he guided me a lot of, and he take care a lot for me. And even nowadays also, he used to call me frequently, then asking about the situations of Manipur and Hal Chal Kusra. So for this, I would like to say thanks my senior and our able course coordinator, Dr. Bhupinder Sarji, and also Madam Poonam Pansal, whose leadership and hard work have steered this course from day one. So it was always a pleasure to join class every day with such lovely and engaging people. For me, it was the second time refresher course attended at HRDC, BPS, Mahila Vishwavidyalaya. Now, I thought I became a part and parcel member of the HRDC, BPS. So in the future also, I wish to join all the programs, because all the staffs and the participants, especially my dear participants from the different countries, they are very, very cooperative, and there was no issues, and they were very helpful and very kindful also. And especially our coordinator, Dr. Bhupinder sir, he is very much take care of us, especially we, the Northeast peoples. So, so before the starting of the every session, and he always take care for us, because many are participating from Northeast region. That is why the language should be say in bilingual, or most preferably in the English also. So for this, once again I would like to thank our course coordinator, Sir Bhupinder. During this course, we learned a lot, and especially, yes, then all the objectives of the sessions were also well aligned. That means they are very much met, and resource persons were excellent in their field, and they are very, very cooperative also. Then they all are very much interactive and explain the doubt, any doubt or questions raised by our participants. So, especially during this program, I especially thanks, and I was very much interested. I'm very much interested. The topic developed by, the device developed by Dr. Devendra Mohan, that is the solar oxidation and removal arsenic. So this topic was very much interesting to me, because my area of specialization is in water pollution. That is why I'm very much interested in these simple devices.
also. So once again, I would like to thank our course coordinator and my senior and my respected senior, Dr. Bhupinder Sarji, for giving us opportunity to attend these programs. Thank you very much, sir, once again. Love you, sir. Thank you, Sanjay sir. And now let's move forward. Welcome, Professor Vinod Sharma sir. Sir, we are heartily welcome you. And first of all, I want to give the introduction about Professor Sharma sir. Professor Sharma is currently Senior Professor Disaster Management Consultant at IIPA and Vice Chairman Sikkim State Disaster Management Authority, Government of Sikkim. He is member of Science, Technology and Innovation Policy of Government of India, STIP 2020. He holds PhD in Ecology and Environment from Banaras Hindu University, Varanasi, India, and PG Diploma in Resources Ecology, Banaras Hindu University, Varanasi, India. He has held several positions that include Chief of Party, Program for Enhancement of Emergency Response, Funded Program for 6 Asian countries, Founder Coordinator, National Center for Disaster Management, Professor Disaster Management at National Center for Disaster Management, IIPA, New Delhi, Associate Professor of Ecology and Environment at Grionis University, Benghazi, Libya, Visiting Faculty, Assistant Professor of Ecology and Environment at Suleimania University and Salahadin University, Iraq, Consultant Forest Productivity, Delaware State College, Dover, Delaware University, USA, Visiting Professor, Kyoto University, Japan. Professor Sharma is a member of several committees that includes High-Powered Committee on Disaster Management chaired by Shri J.C. Pant, Committee on Alaknanda Floods, National Committee on Disaster Management chaired by Mr. Sharad Pawar, etc. Now, we heartily welcome you, sir. We are really feel privileged to have you amongst us. Now, welcome, sir. Thank you. Thank you, Madam Daya. Sorry, sir. Sorry to interrupt you, sir. Sorry to interrupt you, sir. जो सर की सबसे सिंपल और सबसे बड़ी जो खूबी है, सर की ब्लेसिंग हमेशा साथ है। जब भी सर को हम फोन करते हैं, सर हमें जरूर टाइम देते हैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। सर कहते हैं मैं आधा घंटा टाइम निकाल लूंगा भूपेंद्र, मैं कहीं भी बिजी हूँ जरूर निकालूंगा। सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिजास्टर का सर का बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट पे हुए हैं सर उसमें सब में आते हैं, चाहे रिसोर्स पर्सन आए, चीफ गेस्ट आए, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए, हमारे को इनॉग्रेशन में आए या वैलिडिक्टरी में सर ही होते हैं मोस्टली। तो सर कहीं भी हो, कहते हैं मैं पहुंच नहीं पाऊंगा बट मैं कोशिश करूंगा, ऑनलाइन जरूर जुड़ूंगा। सर बड़े खुश होते हैं हमें टाइम देके कि बड़ा वो है इस फील्ड में लोग आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जब हम एनवायरमेंट और डिजास्टर की बात करते हैं। तो सर का सबसे बड़ा जो है इनका ह्यूमन बीइंग, ये समझते हैं भी जरूरत है, कहीं भी हैं, कहीं भी बैठे हो, टाइम निकालते हैं हमारे लिए। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम देते हैं। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर भूपेंद्र जी। Dear participants, I'm missing, Madam Shefali ji, because she was in Nepal and she just came. My regards to Honorable Vice Chancellor of this very prestigious university and all the participants, who are attending this program from different part of the country. In fact, the feedback, even before the feedback, the participants, when they were talking informally, I got the feedback of the program. And I was impressed that each and every program must, because normally people wait that in case 1 week finish or 2 week finish, we are getting rid of this program. But here participants were willing that we should continue, with this kind of program.
They were thinking that we should come together, we should have some field trip, we should have some. So I think this is the quality of the program coordinator. And I know Dr. Bhupenji that how he organized the program. He is very meticulous. And in this program, the 2 weeks list of lectures I was hearing, he tried to bring almost all important aspects of environment. Friends, I did my PhD in environment. I am teaching environment since last 50 years. It's an ocean. Nobody can give everything in 2 weeks. But I think the selection of topic, the selection of relevant topics, that is important. And that was, our participants were appreciating Bhupenji, that you selected the right topics, you brought the right people, to interact, and I know this university, and he is right that whenever I get opportunity, I want to visit the university. Whenever, Bhupenji or Shefali ji say that you come, it's a pleasure actually to be with these people. Because very committed person. I mean, very rare to have this kind of teachers who are really wants to give their best. And I think this university is getting prominence. I was very happy when a person from Northeast was saying that I am attending it second time. Because they see that there is value in the program. Nobody is having time, 2 weeks, nobody can give 2 weeks that they are sitting with us and they are listening to, and that too online. In case there is offline, then there is some fun, at least, free lunch or free dinner. I mean, at least you get something. But here you are getting knowledge. And for this knowledge, I think I compliment the coordinators that they brought the best resource person of this area, of this region, and the selection of the scheduling of the program. So I think his whole team, Shefali ji, Bhupenji, they are very, very committed person. And whatever I am hearing, this is not for the first time. In every program, there is lots of appreciation for their program because of their commitment. Friends, I am happy that the people from mathematics, from physics, from history, from social sciences, everybody is attending this program. Because environment is everybody's subject. When I was a student, when I was doing my PhD, I thought it is of biological science. I was having the wrong notion that environment, ecology, this is a subject of people who are, studying botany or zoology. And then I did a diploma, postgraduate diploma from Banaras in resources ecology. And I came to know that, oh my God, I mean, this is nothing to do with biology. This is everybody's science. It may be social science, it may be economics, it may be, I think every aspect is there in environment. And when you are talking about sustainability, I think we all should know what we really mean by sustainability. This country is going to be, a developed nation in 2047. When our leaders are committed, I am sure that it will be till now there was no commitment. Till now, no leader has told us that you can also be a developed country. For the first time in my life, I am also 70 plus. In my lifetime, for the first time I am hearing that somebody is saying that by 2047, you will be a developed nation. It may not be 47, it may be 50, but there is some plan that we will be a developed country. And in case we are talking about development, then I think we should know sustainability. We should know about environment.
we should know about disaster risk. So it is not subject. It is not mathematics or economics or sociology. I think every teacher and friends, let me tell you that Dr. Bhupenji or this university, whatever efforts they are doing, this is their commitment for the environment. They are not doing it just for the course sake. They have no intention that I have done 10 course or 15 course. Their intention is that as many people as they can, they want to involve in the process of understanding that what is sustainable development, what is sustainable environment, what is disaster risk, how everyone can contribute in disaster risk reduction. I think this is their intention, and that's why I go in this institution. I have nothing to do, whether it is, a central university or a state university, or I have nothing to do with this. I see the commitment of these people and the way they do it, the way they conduct the whole program, and the way program flows actually. This is very important. Friends, let me tell you that I witnessed 1987, Mrs. Brundtland, when Brundtland Commission report came, there was, United Nations set up a commission on world environment and development. And 1987, Mrs. Brundtland submitted report. She came to India, and in Vigyan Bhavan, she presented this report to our Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi ji. And Rajiv Gandhi, you believe me that our Prime Minister, Honorable Prime Minister, was sitting in the whole presentation. And after that presentation, he became so interested. He became so interested in the environment and all these issues which she was talking about. She was talking about global warming. She was talking about, ozone depletion. She was talking about deforestation. She was talking about soil salination. She was talking about water pollution, air pollution, and about biodiversity, and about 21 points which she mentioned. And our Prime Minister realized that, oh my God, we should be very serious about of our environment. And you believe me that the same month, he organized a meeting in the Parliament annexing, and all cabinet was there. His all cabinet colleagues were there, and he brought one person from Center for Science and Environment, Mr. Anil Agarwal. You might have heard about Sunita Narayan. Sunita Narayan is working in the same organization where this is Center for Science and Environment. And Anil Agarwal gave 2 hours lecture on these issues, that how these things are relevant to India. Friends, today we have a Prime Minister who is very much committed to environment, who is going to every COP. I was also in Dubai when Honorable Prime Minister Modi, he went to Dubai, and I was overwhelmed. I was overwhelmed that there was a presence of about 87,000 people, and everybody was listening to what Prime Minister Modi is saying. There was only one head of the state who was there in Dubai, and he was our Honorable Prime Minister. It is a matter of pride to us that India is so conscious about environment. India is so conscious about climate change. And it is not only saying, ये कोई भाषण नहीं हो रहे हैं. He is doing it. He has made, you see the solar energy.
You see how much is commitment. He is seeing that 1 crore rooftop, and that will be done. He has committed 1 crore. I am saying that it will be 10 crores. Because once people understand that the intention of the leader is good, then we all cooperate. Then teachers like you, everybody will come, forward and assist, because this is a nation building. This is not Modi or Congress. We have nothing to do with the politics. We have to see our future. We have to see whether our children, they will survive or not. In Delhi, you might have seen that in 10 minutes session, I have taken, 2 sips of water. In Delhi, you cannot, even take breathe. This is the situation. So in this situation, in case we are not aware about environmental issues, in case Dr. Bhupendra is telling you that what is air pollution and how it is affecting our health, how water pollution is important and affecting our generations, how our, not only health, our whole crop, our cropping system, our everything is affected by air and water. So I think, this is basically a sensitization program. And in this sensitization, they have selected right topics. They have given you the, orientation about that how important is biodiversity. Now, India is one of the 16 mega biodiversity zones. We have northeastern Himalaya. We have Western Ghat. We have so many, where I think these things are important to us, and these topics will give you some idea at least that what we can do. Manipur, Arunachal Pradesh, Northeast, it is so rich in biodiversity, and in case they have they sensitize their student, and this can give livelihood, to the people. It is not just plants and animals. I know, I'm also working in Sikkim, and I know that the snow leopard, it has becoming so much attraction for Sikkim. Foreigners are coming, for just to see snow leopard. So one species, and how much attraction. So India is full of biodiversity. You see Ganga, the dolphin, our kids, Ganga dolphin, this. So I think everything, which we are discussing in this kind of course, the important thing is that it should not end by the 2 weeks program. My request to you guys is that you are a teacher, and teacher is having lots of responsibility. I was also teacher, for 30 years. I taught in India, I taught in Iraq, I was in Jordan, I was in Libya, I was in US, and as a teacher, I see that we always criticize people. Our major role is because we have very little to, do, we have enough time, and this time we do, criticism. Either we do criticize our own colleague, or our principal, or our vice chancellor, or I think you guys are so knowledgeable. I think that energy, in case you give or enthuse, in your student, these young people can create wonders. Bhupenji, I am busy now in Ganga, Namami Gange program, and I am creating awareness, in the masses. I have covered almost all universities, central, state, etc. And I am seeing lots of enthusiasm in these students. I see that they are committed. They say कि there is no need. गंगा दूत की क्या जरूरत है? हम ही गंगा दूत हैं. गंगा प्रहरी की क्या जरूरत है? आप क्यों पैसा खराब? हम गंगा प्रहरी. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम teachers, in case we sensitize our student, in case we tell them what is the environment, in case we tell them what is sustainability, I think they will be with us, because
in India, our students are very nationalist. This is our gain. You may be from any state, but we are nationalists. We believe that nation first. And in case nation first, then environment first. Unless and until we do something to protect environment, unless and until every one of us contribute in conservation, I think only government effort is not enough. भूपेन जी इस चीज को जानते हैं कि मैंने आज से 35 साल पहले जब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू किया तो nobody was knowing the name of disaster management. It was not a subject. आज जो है, you will be very happy to know that more than 100 universities, they are either having a full paper, or they are 22 universities are giving degrees, in disaster management. There is MSc degree. Tata Institute of Social Sciences, they are giving MSc in disaster management. I started from scratch, and then I, involved each and every section of the society. And not only this, without academic involvement, I think you cannot achieve anything. And this may be the reason that Honorable Prime Minister honored me with Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Award in 22. I am grateful to him that he recognized, that this is a very important subject, and there is a contribution of this gentleman in the country. And I am really, my heart and soul, I am saying that every one of us, should know the risk. We should know what are the risks, in our state, what are the risks where we are working, what are the risks when we are driving car, what are the risks, to our children. So I think this is very important. India has signed Sindhi framework in 2015. I think Sindhi framework, there are 4 priorities. First priority is knowing risk. So I think, and this first priority, my teacher colleagues can play a very important role in it. They can disseminate this knowledge. They can define what are the risks. They can tell students, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, they are not in syllabus. Many things, they are not even in the books. When I started working in disaster management, there was not a single book on disaster management. The first book on disaster management was written by me. So, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीज लिखी हुई हो. I think there are many things, which you can do, which you can create. And I'm proud of, my community, because I also feel myself teacher. I am proud of you that in 2 weeks' time, you spend time here. You spend time to discuss, waste management. You spend time in water resource management. Because, as I told you, that government is spending Ganga, Namami Gange. In one river, government is spending 20,000 crores. They are doing their best. They are doing, sewage treatment plant, effluent treatment plant, manufacturing of ghats. There is solid waste management. They are doing a lot. But unless and until our children, unless and until we guys, we involve in this, I think government cannot succeed. We will have to contribute. Our teacher friends will have to contribute. So, it may not be Ganga only. It may be any other river. It may be Brahmaputra. It may be any. We have 12 river systems. In this country, we are so fortunate. 12 नदियों के यहाँ पे basins हैं. So we should be proud of this thing that we have that much of water resources. And so friends, I'm really overwhelmed.
really praise my friend, Dr. Bhupen, that he is doing wonderful job, and he will be successful in his mission in communicating that how important is environment, how important is sustainability, and how important is, because today our all teacher friends should know these three things: climate change, the Paris Agreement, which we did in 2015, Sustainable Development Goals, which we have signed in 2015, Sindhi Framework, which we signed in 2015, and our Honorable Prime Minister's 10-point program, which he gave in 2016, which is the crux of the whole thing. Friends, I stop here because I have a very important meeting. I am already late because Bhupenji told me that you will have to come. So he is just like my younger brother. I have great respect for him. I have great respect for all teachers of this very prestigious university. And with folding hands, I am saying that you are all great guys, but do something. This 2 weeks effort of this university should not go waste. This is my request to you. And I greet each one of you. Lakshmi, mute yourself. Compliment you a lot. Thank you very much. Thank you, Sharma sir, for your valuable views about the disaster management or development, sustainability development. We will try to ensure you, sir, that we will definitely do something on behalf of individual. सर कहीं ना कहीं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे होता है ना कि सर्कमस्टांसेस जो हम एक बहाना जिसको हम कह सकते हैं कि हम बहाना ही लेते हैं, अदरवाइज हम कर सकते हैं सर। जैसे हम मान लो मैं एक छोटे से गांव है, जैसे एक रिमोट हम जाते हैं, हाईवे पे गांव है हमारा, तो कॉलेज में सर हम 20 के नियर अबाउट फैकल्टी हैं, तो 20 के 20 अपने ही व्हीकल वहां पर लेके जाते हैं। तो हालांकि मैंने अभी पीछे सजेस्ट किया कि हम क्यों ना एक 1 डे जो है हम कार फ्री डे रखें, तो थोड़ा सा उसमें इनिशिएटिव मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ सर, और थोड़ा सा मैं कर भी रही हूँ, और शायद इसके बाद मैं उस चीज को थोड़ा और ज्यादा फोकस करूंगी कि किस तरह से हम एज एन इंडिविजुअल जो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है वो हम अपना इस चीज के लिए दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आ रहा हूँ, I have to leave, Bhupenji, excuse me, because my DJ is calling me. Now, it's time for vote of thanks. Bhupender sir, I request you to... Thank you, Dr. Meenakshi. Being the course coordinator of this program, it's my privilege to propose vote of thanks. Honorable Vice Chancellor Sudesh ji, our distinguished guest, Professor Sharma ji, Registrar, Director Shefali ma'am, Deputy Director Varna ma'am, dear participant. It's a great honor me to propose vote of thanks. As Professor Vinod said, government can't do anything. It is community. We have to play our role. अगर हम बात करते हैं हमारा क्या रोल है, एटीट्यूड, एक क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन मिला था, आपने कहा था, सो किसी ने कहा मेरे से सर ये क्वेश्चन गलत है, ये इसमें पॉल्यूशन होगा, किसी ने कहा पॉपुलेशन होगा, किसी ने कहा इंडस्ट्री होगा। नहीं, हमारा एटीट्यूड। अगर हम बात करते हैं, if we talk ancient time, उस टाइम इंडस्ट्री नहीं थी, उस टाइम कोई प्लास्टिक नहीं था, उस टाइम पॉलीथीन नहीं था, उस टाइम पेस्टिसाइड नहीं थे, उस टाइम धरती की कमी नहीं थी, उस टाइम रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बट हमारे जो एंसेस्टर थे, सेंट थे, उन्होंने लिखा था पानी का क्या महत्व है, पशुओं का क्या महत्व है, पक्षियों का क्या महत्व है। आज भी गांव में दादी को, नानी को देखते हैं, आप गांव में देख लो, हरियाणा के हर गांव में आपको मिल जाएंगे बुजुर्ग औरतें जो चींटियों को आटा डालने जाती हैं, पक्षियों के लिए मुंडेर पे पानी रखेंगी, गाय को रोटी खिला के आएंगी, कुत्ते को रोटी डालते हैं, पौधों को पानी देते हैं, प्याऊ लगाते थे, कुएं खुदवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, सराय बनवाते थे। उस टाइम तो कुछ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, उस टाइम पैसा नहीं था लोगों के पास, बट लोगों का एटीट्यूड देखा कुछ नहीं होते थे, वो गांव के लिए, समाज के लिए। अब हम उस सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, बनी मेरे गांव में 5-5 एकड़ की इतनी वो पंचायत की जमीन थी, लोगों ने कब्जा कर ली। वो गांव के लोग छोड़ते थे,
पशुओं के लिए, गाय के लिए, चरागाह के लिए, पक्षियों के लिए, वो सब हम लोगों ने खत्म की। एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा एटीट्यूड खराब हुआ। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। पहले हम कहते थे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हम लिमिटेड सोर्सेज में, आज हमारे पास इतने रिसोर्स होते हैं, घर पे इतनी चीजें हम इकट्ठी करते हैं। उनमें से मेरे को लगता है हम सबके कपड़े देखे हैं, मैं मेरी बात करूं, आपकी बात करूं, वेल टू डू है, इतने सबके वार्डरोब भरे होंगे, उनमें से कई कपड़े तो ऐसे होते पूरा साल डलते ही नहीं, उसका नंबर ही नहीं आता। पहले हमारे पास, हम बात करते हैं, मैंने वो टाइम देखा है, पापा को, ताऊ को शादी ब्याह में पड़ोसी से चादर ले लेते थे, पड़ोसी से कपड़े ले लेते थे, पड़ोसी से मैंने पापा को देखा जूती मांग के भी ले लेते थे। वो अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करते थे, खराब नहीं करते थे, लिमिटेड रिसोर्स यूज करना, वो दिखावा नहीं करते थे। एनवायरमेंट की बात करते हैं, छिलके थे, सब चीजें थे, मिट्टी में डालना, गाय को खिला देना। अब पॉलिथीन में बांध के सारी गंदगी फेंकते हैं। हर दिन भारत में 100 गाय मर जाती है इस पॉलिथीन में, जब हम कचरा बांध के फेंकते हैं। और मैंने आपको बताया, रियल में रियलिटी है, अगर कोई भी एनालिसिस कर ले, कोई रिसर्च कर ले, कोई स्टडी कर ले, एनवायरमेंट को जितना नुकसान, हम जो बैठ के वो करते हैं ना, कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हम ही लोग करते हैं। हमारे में से कितने लोग जो सीरियसली, यहाँ से आप में से हैं जो सीरियसली सीख के करेंगे। और सब कहते हैं ना गवर्नमेंट का है, समाज का है, लोगों का है। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, सब जो मैं कर सकता हूँ, जो मीनाक्षी मैम कर सकते हैं, जो जोगेंद्र सर कर सकते हैं, अपने लेवल पे उतना ही होता है। कोचिंग सर ने 3 की बात करके 5 बार बताया था। अब क्या कहता है? रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, यूज, रिसाइकल एंड रिकवर। पैसे हैं, अच्छी सैलरी है हमारी, हर तीसरे महीने नया मोबाइल आ रहा है, तीसरे महीने नया लैपटॉप आ रहा है, टैबलेट आ रहा है। पैसे हैं, हम देखते नहीं, भाग के ले लेते हैं। वो किसी को औने पौने दाम में देंगे, घर पे रखेंगे, बच्चों को देंगे। हमारा काम चल रहा है तो हमारी ये आदत खराब हो चुकी है, भी हाँ काम चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी ने, मीनाक्षी मैडम ने नया मोबाइल लिया तो कल मैं भी लेकर आऊंगा, मैंने लिए तो जोगेंद्र सर देखते हैं इसे लिया, मैं भी लेके आऊंगा। वो जो अंधी दौड़ है ना, दौड़ जो हमने शुरू की, और ये रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में इकलौता कंट्री होगा, ऐसा कंट्री नहीं है जो अगर हमारी सभ्यता की बात करें। गर्ग सर ने जैसे बताया था, हमारे यहाँ क्यों आए, वाकई में सोने की चिड़िया थी, सब चीजें थी हमारे पास। मेडिसिन की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, कितनी चीजें हमारी भारत से पूरी दुनिया में गई हैं। हम तो चीजों की वर्थ वगैरह की, फास्ट वगैरह में लोग कहते हैं ढकोसले हैं, मजाक है। नोबेल प्राइज मिला था अमेरिका के साइंटिस्ट को भी, हम फास्टिंग करते हैं तो कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। इस पे किसी को नोबेल प्राइज भी मिला है। को रेस्ट मिलेगा, आराम होगा, अन्न बचेगा, फ्यूल नहीं जलेगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। हमारे यहाँ तो दिन बने हुए थे, वीरवार को कपड़े नहीं धोने। क्यों नहीं धोने? चलो वीरवार को पानी का सेविंग होगी, पानी खराब नहीं होगा। ये जो चीजें थी साइंटिफिक थी, हमने उनका मजाक उड़ाया, ढकोसला माना। पीपल के पेड़ की बात करते हैं, मैं मेरी बताऊं, मेरे गांव में, मेरे खेत में पीपल का पेड़ है। पानी का टैंक बनाने की गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है, पानी का टैंक बनता है। हमारे यहाँ पानी की कमी है, वो टैंक हमने बनवा लिया। पीपल के पेड़ की जड़ उस टैंक में है, वो पक्का नहीं किया। अब परेशान हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने हमारे को पैसा दे दिया, सब्सिडी दे दी उसको पक्का करवाने की। हम पक्का नहीं करवा रहे क्योंकि उसमें पीपल की जड़ फूट आई है, और कोई पीपल को काटने के लिए तैयार नहीं है। पूरे गांव में लोगों का इतना वो था, कोई भूत थोड़ी है उस पे। वो जी पाप लगेगा, पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसमें तो पाप लगेगा, कौन भुगतेगा? मैं नहीं काटूंगा। तो वो इतने अच्छी तरह हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में एम्बेडेड थी। आज जो नई जनरेशन की बात करते हैं, सब चीजें छूटी, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ी। वायु की बात करो, हमारे यहाँ तो हम भगवान कहते हैं। भगवान, आप सबको पता होगा भगवान की फुल फॉर्म क्या है, जो 5 वर्ड से बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों को, जो प्रकृति के सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिससे
सिस्टम चलता है। इन्हीं चीजों में जब गड़बड़ होती है तो सब चीजों में गड़बड़ होती है। कोई भी एक चीज कम ज्यादा होती है तो पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, कम होगी तो सूखा पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अग्नि लगेगी, फॉरेस्ट फायर होगी, कितने एनिमल्स मरते हैं, कितने रिसोर्सेज खत्म होते हैं। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, भूमि की बात हम करते हैं, मिट्टी, दुनिया की अगर हम बात करते हैं, डेजिटिफिकेशन इस तरह बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा, इंडिया की हर साल 5 बिलियन टन फर्टाइल टॉप सोइल हमारी नदियों में, समुद्रों में चली जाती है। अब आप कहोगे सर तो बारिश से होता है, वो भी हमारा रोल है। बारिश अनइक्वल कर दी हमने, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है। वो जो मानसून की झड़ियां लगती थी, एक महीना 20 दिन सूरज नहीं निकलता था, वो हमने डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल जला जला के, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा के क्लाइमेट में जो चेंज किया, उस वजह से हमारा सारा रुका। वो बारिश की बात कर लें, वायु की बात कर लें। अभी जो विनोद सर बता रहे थे, बराक ओबामा ने जब दिल्ली आना था किसी इवेंट में, उस टाइम AQI बहुत ज्यादा था, याद नहीं मेरे को कितना था। अब दिल्ली में कहते हैं उस टाइम जो एनालिसिस किया गया था, अभी जो दिल्ली में है उसकी 6 घंटे लाइफ कम होगी आज के दिन जो दिल्ली में पहुंचेगा। दिल्ली के जो लोग रहते हैं, दिल्ली के लोगों का आप फेफड़ों का एनालिसिस कर लो, और जो मैं खानपुर में बैठा हूँ या मीनाक्षी मैडम जसिया बैठी हैं, वहां के गांव के लोगों का फेफड़े का एनालिसिस कर लो, कि फेफड़ों में तार मिलेगा जो दिल्ली में लोग रहते हैं। पूरे के पूरे जितने हमारे मेट्रो है सबको जोड़ दें, और अकेले दिल्ली को सबसे ज्यादा व्हीकल हैं, तो भी कितना धुआं डेली अपने फेफड़ों में लेके होंगे। भूमि की बात करें, वायु की बात करें, जल की बात करें, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग 50% लोग ग्राउंड वाटर पे हैं डिपेंडेंट। पाइप वाटर कितने लोगों के पास पहुंचता है? दिल्ली में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। भारत में हर दिन 4000 से 6000 बच्चे मर जाते हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के डायरिया से। कितनी बीमारियां पानी से हैं। मैक्सिमम जो डेथ दुनिया में होती हैं गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो भूमि, वायु, पानी, आकाश की बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान जो बढ़ेगा, 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा, पिछले जो हमारे सेंचुरी का सबसे वार्म जो रहा। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर से हम सोचते हैं इससे क्या होगा, वो जो साइक्लोन बढ़ेंगे, बाढ़ बढ़ेंगी, सूखे बढ़ेंगे, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कम होगा, बीमारियां बढ़ेगी। पहाड़ों पे जहां पहले मलेरिया डेंगू नहीं था, वहां मलेरिया डेंगू देखने को मिलता है। जहां कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वहां भी डेंगू और मलेरिया के मच्छर हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा हो गया, मच्छर वहां भी पनपने शुरू हो गए। प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट जो रिसर्च बता रही है, हमारे पीने के पानी में प्लास्टिक है, दूध में प्लास्टिक है, खाने में प्लास्टिक है। हम तो सुबह शुरुआत ही प्लास्टिक से करते हैं, ब्रश हम प्लास्टिक का करते हैं। कभी बुजुर्गों को देखा, आज भी जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, अभी मैं एक बुजुर्ग की डेथ हुई थी, उनके सेरेमनी में, डेथ सेरेमनी में मैं गया, उनकी एज थी 92, कहते हैं 32 के 32 दांत ठीक थे। और मेरे को लगता है हम जो 20 लोग 22 लोग बैठे हैं, हमारे में से जरूर मिल जाएंगे जिनकी जाड़ निकली हुई है। मैं बैठा हूं, मेरा एग्जाम्पल, मेरी एक जाड़ निकली हुई है, उनकी जाड़ नहीं निकलती थी। वो नीम का दातुन, कीकर का दातुन करते थे। हम जो प्लास्टिक का ब्रश करते हैं, इसमें जो है हमारे मुंह में खुशबू तो देती है। रिसर्च गूगल करके देखना इसमें क्या क्या केमिकल हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, हमारे अंदर जो चले जाते हैं। सबसे बड़ा तो जो प्लास्टिक है, वो माइक्रो प्लास्टिक कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड से जो नई रिसर्च, अभी रिसर्च आई है 6 महीने पहले, मदर का जो प्लेसेंटा है, जो बच्चा है माँ के पेट में, वो जो गर्भनाल से जुड़ा है, उसको भी प्लास्टिक पहुंच रहा है। उसके ब्रेन में प्लास्टिक पहुंच गया, ब्रेन में कार्बन सूट पार्टिकल पहुंच गए, माँ के दूध से, माँ के खून से, दूध से नहीं खून से। तो वो जो हम बात करते हैं, कैंसर की बात कर रहे थे, गर्ग सर ने कैंसर ट्रेन की बात की थी, अभी हम पंजाब की बात करते हैं, मेरे लगता है हरियाणा का कोई गांव नहीं बचा होगा जहां आपको कैंसर के पेशेंट ना मिले। अभी पीछे 15 दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, 3 लाख लोग जो पेशेंट कैंसर के हरियाणा में। ये तो वो लोग हैं जिनका डायग्नोज हो गया, जिनको पता है। जो पुअर है, हैंड टू माउथ हो, तो टेस्ट नहीं करवा सकता बीमारी क्या है। और ये सारा का सारा अत्यधिक जो हमने प्रकृति का दोहन किया। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, हर साल दुनिया से 10,000 प्लांट स्पीसीज, वो जो हम हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, सनातन धर्म में पढ़ते हैं, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। साइंस कहती है वाकई में धरती के ऊपर इतनी तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी मिलते हैं, मिलते थे, मिलते नहीं है, मिलते थे। कितनी चीजें हमने खत्म कर दी।
फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, 1900 में जब बात करते हैं उस टाइम दुनिया में लगभग 8,000 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट थे। आज सिर्फ 2,000 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट बचे हैं। तो कोई तो कोना हम देख लें जहां हमने छोड़ा हो। और आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना है? यस मीनाक्षी मैम, आइंस्टीन का नाम सुना होगा ना सबने, आप सब लोगों ने। Once Einstein said, if honeybee disappear from the earth, after the disappearing of honeybee, within 4 years, human will also disappear from earth. कोई बता सकता है क्यों? आइंस्टीन ने कहा था, सभी से रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कर लें जो कर सकते हैं, प्लीज ऑन योर कैमरा। पोलिनेशन के Yes, pollination. If honeybee disappear within 4 years, human race will also disappear. Pollination. ये जो हम फॉरेस्ट देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, जितने पेड़ हैं, तितली हैं, गिलहरी हैं, पक्षी हैं, मधुमक्खियां हैं, इनका रोल है। अगर हम धरती पे ना हो तो धरती अपना काम करेगी, चलती रहेगी। बट जब बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं है प्रकृति को। प्रकृति अपने आप को साफ कर लेती है, अपने आप रीजनरेट कर लेती है। हम तो डिस्टर्ब करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, हमारे तो संस्कृति में है, डीएनए में है, सहेजना, बचाना, कंजर्व करना। बट जो ये भेड़ चाल चली दुनिया की, देखो वेस्टर्न वर्ल्ड तो हमारी जितनी अच्छी चीजें वो अपना रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, और हम उनकी चीजों को यूज कर रहे हैं। वो वापस लौट रहे हैं जहां से हमको देख के उन्होंने सीखा कि हाँ इनके कल्चर में कुछ था। दुनिया हमसे सीखती है, हम अपनी चीजों की वैल्यू नहीं करते। सबसे बड़ी विडंबना यही है, हमारा जो एटीट्यूड। तो इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब लोगों का 15 दिन के प्रोग्राम में जो अच्छा वो रहा पार्टिसिपेशन, सब लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सभी लोग अच्छी तरह जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। और सब लोगों से फ्यूचर में कभी ऑफलाइन मोड में मिलेंगे। सबके जो है मेरी रिक्वेस्ट है, सब अपनी डिटेल एक मेल मेरे को जरूर डालें अपने फोटो के साथ, ताकि मैं उसको अपना एक स्टोर करूं, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लूं। ओके सर। Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. सो Yes, sir. इट्स ऑल अबाउट एनवायरमेंट की। जैसे सर ने बात किया, विनोद शर्मा सर जो कह रहे थे, पोल्यूशन है। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं एनवायरमेंटल साइंस का टीचर हूँ, तो बच्चों को मैं ये कहता हूँ एनवायरमेंटल स्टडी खिचड़ी सब्जेक्ट है। तो बच्चे हंसते हैं, बोले सर खिचड़ी का क्या मतलब? मैंने कहा इसमें आपको सारा कुछ सीखना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आप पूरी लाइफ पढ़ेंगे तो भी आप पूरा नहीं पढ़ सकते। मेरे को मीनाक्षी मैडम से लिटरेचर भी पढ़ना है, मेरे को जोगिंदर सर से लॉ भी पढ़ना है, मेरे को टोनी सर से एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, मेरे को किसी से बॉटनी के बारे में पढ़ना है, मेरे को किसी से जूलॉजी के बारे में पढ़ना है, मेरे को किसी से इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ना है, मेरे को किसी से सोशल साइंस के बारे में भी पढ़ना है। सोशोलॉजी क्या है, सोशल साइंस क्या है, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, सोशल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बीइंग पे। तो हम सब चीजों को पढ़ते हैं, सब चीजों का रोल रहता है एनवायरमेंट के अंदर। इसलिए एनवायरमेंट को मैं खिचड़ी सब्जेक्ट कहता हूँ, कि सब चीजें इकट्ठी खिचड़ी बनाते हैं ना। दाल है, चावल है, नमक है, घी है, कितनी चीजें डलती हैं, छोंक लगाते तो उस्मान और डलता है। तो और बहुत भी टेस्टी है वो खिचड़ी जो है सर, बहुत टेस्टी भी है। यस, और सबसे रियल में टेस्टी है। ये जो हम एस्थेटिक वैल्यू की बात करते हैं, संजोय ने याद दिला दिया, वो एक चीज बतानी भूल गया था। वो जो हम हंटिंग करते हैं हाथी की, टस्कर एलिफेंट के दांतों के लिए, वो दोनों दांत उसके 25 से 30 लाख में बिकते हैं। वही हाथी अगर अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, पता है कितना टूरिज्म देता है। सिंपल सी जो स्टडी हुई थी, एक पेड़ अपनी लाइफ में $5 लाख की चीजें हमारे को देता है। शुद्ध ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करता है, वर्षा लाने में हेल्प करता है, सोइल इरोजन रोकता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, छाया देता है, टूटी फूटी लकड़ी उसकी फर्नीचर के काम आती है, फ्यूल के काम आती है। एक पेड़ की जब बात करें, एक राइनोसेरस की बात करें, वंस हॉर्न
एक एलिफेंट की बात करें, टाइगर की बात करें, अगर सर्वाइव करते हैं, इतना इनकम देते हैं। अब जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया का पहला, वहां लोग जाते हैं टाइगर को देखने के लिए, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का। अगर हम उसको मारते हैं, मैक्सिमम $1,000 इज द प्राइस ऑफ दैट टाइगर, maximum $1,000. But if she survive for 8 to 10 years, perhaps give approximately $2 lakh in 10 years. अब आप कहोगे सर इतना कैसे देता है? वो लोग जो टैक्सी करके जाते हैं, वहां होटल बुक करते हैं, पीसीओ यूज करते हैं, वहां परचेजिंग करते हैं, अंदर जाके उसको सफारी के लिए गाड़ी बुक करते हैं, जो रेवेन्यू मिलता है सिर्फ मारने से आपको $1,000 मिलता है। और वही अगर सर्वाइव करता अपनी लाइफ पूरी, $2 लाख के करीब वो इनकम जनरेट करके देता है। हम अभी जो संजय ने कहा, एस्थेटिक जो वैल्यू है उसके लिए जाते हैं। कोई दिल्ली में कनार बाईपास पे कूड़े के पहाड़ पे घूमने कोई नहीं जाएगा, नैनीताल जाएंगे घूमने, नैनी लेक पे, डल लेक जाएंगे, लोकटाक लेक जाएंगे मणिपुर, कूड़े के पहाड़ पे कोई भी नहीं जाता। तो प्रकृति का जो मूल्य है उसको हम मॉनेटरी तो उस वैल्यू में तो काउंट ही नहीं कर सकते, अमूल्य। So it was all about the biodiversity, forest, water, air, soil। अभी प्लास्टिक की बात कर रहे थे, सबसे रिक्वेस्ट है पॉलीथीन कम करें, कपड़े का थैला यूज करें, प्लास्टिक का ब्रश भी आप धीरे धीरे बंद करें, दातुन यूज करें, और चीजें यूज करें, क्योंकि हमारे ब्लड में आ रहा है ये। और अभी महेश सर जैसे बताते हैं, अभी रिसर्च चल रही है, क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे प्लास्टिक के, पॉलीथीन के, हमें नहीं पता। अभी देख लो, पहले की बात करते थे, पहले की जो वीमेन होती है कितना काम करती थी, कैसे खेतों में जाती थी, कितने कितने बच्चे होते थे। अब तो इनफर्टिलिटी, सब चीजें जो बीमारियां बढ़ी है, हमारा जो फास्ट फूड है, पेस्टिसाइड है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इनका बड़ा इफेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर, इतना इफेक्ट आ रहा है हम सोच भी नहीं सकते। वो जो प्लास्टिक की पाइप में ओवरनाइट पानी खड़ा है, उसमें लेड है, उसमें आपका कैडमियम है, वो लीच होता है, वही पानी हम सुबह पीते हैं आरओ से निकाल के। वो डिपेंड करता है पानी की पीएच कैसी थी, अगर पीएच पानी की कम है तो ज्यादा लीच होगा, पानी सॉफ्ट है तो ज्यादा लीच होगा। ये जो हमारे मणिपुर से हैं एनवायरमेंट साइंस के टीचर, उनको ज्यादा पता है। जनरल साइंस की बात करें तो जब पानी की पीएच कम होगी, पानी सॉफ्ट होगा, तो ये चीजें ज्यादा होती हैं पानी में। पानी हार्ड होता है, पीएच अल्कलाइन होती है, तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उस प्लास्टिक की पाइप के में वो पानी टच में नहीं आएगा, तो कम आएगा उससे हमारे पीने के पानी में, नहीं तो ज्यादा आएगा। पॉलीथीन में हम गर्म चाय लेके आ रहे हैं, पॉलीथीन में बाजार से खाना पैक करा के लेके आ रहे हैं गर्म। और ये आप सोचिए ना, सर वैसे कह रहे हैं एनवायरमेंट के नहीं, एनवायरमेंट जैसे किसी एनवायरमेंट साइंस के टीचर का सब्जेक्ट नहीं है। एनवायरमेंट सबका है, सबके लिए है, सबको करना है। अभी विनोद शर्मा सर जो कह रहे थे ना, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जब तक पब्लिक किसी भी मुहिम के साथ खड़ी नहीं होगी। ला से कुछ नहीं होता। आप जोगेंद्र सर कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, होता है। एक तो आपके डीएनए में हो जाए, आपको पता है ये गलत है, मेरे को नहीं करना, तो आपको ला की जरूरत पड़ेगी? ला की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ला की बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बार्किंग डॉग है, बाइटिंग नहीं है। एनवायरमेंट के आप हैं, आप हमारे से ज्यादा, आप लोग के आप ज्यादा बता सकते हैं कितने लैकुना हैं हमारे लाज में, कैसे निकल जाते हैं क्रिमिनल। तो बार्किंग ज्यादा है, बाइटिंग हमारे यहाँ कम है। बट जब हमारे डीएनए में होगा, हमें पता होगा, एथिक्स होंगे, वो चीजें हम करेंगे नहीं, तो लॉ का कितना का रोल रहेगा। तो एनवायरमेंट के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप खुद से शुरू करेंगे, किसी को साथ जोड़ेंगे। अभी जो सर ने कहा, सर प्राइम मिनिस्टर की प्रेज कर रहे थे, मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, ना तो मैं जैसे सर ने कहा कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं बीजेपी की बात करूंगा। बट मोदी जी ने आके जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, और लोग कहते हैं बोला ये तो डोकोसला करते हैं, झाड़ू लेके हाथ में खड़े हो गए, बोले तो साफ जगह साफ कर रहे हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर के झाड़ू थोड़ी लगाएगा, वो सिंबलाइज है, एक वो संदेश देने के लिए भी मैंने झाड़ू हाथ में उठाया, आपको भी झाड़ू हाथ में उठा के सफाई करना है। पूरी दुनिया में ये सिंबल देना जो स्वच्छ भारत मिशन। आप मणिपुर में चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, केरला चले जाओ, वहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लिटरिंग नहीं करते। हमारे तक पढ़े लिखे लोग, प्रोग्राम खत्म हुआ बाहर उठा के बाहर फेंकेंगे गंदगी।
गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। इंदौर में लोग गाड़ी के अंदर डस्टबिन रखते हैं। वहां वीक रहा, एक वीक में रहा इंदौर में, लोग गाड़ी में डस्टबिन रखते हैं। तो हम नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर हम अलग अलग कूड़ा करते हैं, फायदा तो नहीं लेके जाते। कोई ना लेके जाए, आपने अगर गीला कचरा अलग कर लिया, आपको देने की जरूरत ही नहीं है किसी को। घर में ही आप गड्ढा बना के गड्ढे में डालो, उसकी खाद बनती है। घर पे गमले, सबके घरों में आजकल गमले होते हैं 2 4 5, घड़े में डाल के उसको छेद करके हिलाते रहो, उसकी कंपोस्ट बन जाती है। और हमारे हरियाणा में तो हम ये नहीं कह सकते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। अब मीनाक्षी मैडम ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, जसिया तो गांव है। और मैडम रोहतक से भी आती है, तो रोहतक में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। सर मैंने तो सारा घर भर रखा है पेड़ पौधों से। वही तो ये चीजें तो हम कर सकते हैं, बट ये कहना ना वो हमारा एटीट्यूड है कि कैसे करूं, मेरे तो है नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। ये जो एटीट्यूड है हमारा, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। और सीखना हो तो ना अनपढ़ से सीख सकते हैं, चीजों को कैसे यूज करना है, रीयूज करना है, कंजर्व करना है, गरीब से सीख सकते हैं। बट नहीं, हम तो लिटरेट है। और मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें मैं खुद भी हूं, चाहे आप भी बुरा मत मानना। मैं क्लास में जब लेक्चर देता हूं बच्चों को, पता है क्या कहता हूं? लिटरेट इलिटरेट, पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे और शिक्षित में बड़ा फर्क होता है। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर शिक्षित और पढ़े लिखे का अंतर क्या होता है? मैंने कहा बेटा, जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे और सही के साथ खड़ा हो, गलत के खिलाफ खड़ा हो, वो शिक्षित है। चाहे वो अनपढ़ है तो भी उसको शिक्षित मानता हूं मैं। और जो पढ़ा लिखा है वो गलत देख के आंख बंद कर ले और सही के साथ खड़ा ना हो तो उसको तो मैं अनपढ़ ही मानूंगा। पढ़ा लिखा होके जो गलत काम करता है उसको मैं अनपढ़ मानूंगा। हम साइन कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लेटर पढ़ लेते हैं, बट हम शिक्षित नहीं है जब तक हम अपनी ड्यूटी और राइट दोनों को साथ नहीं लेके चलेंगे। हमारा डीए कम कर दिया, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा राइट है, बट हमारी ड्यूटी भी है। जैसे बोर्ड में करते हैं, अपना काम करके स्ट्राइक करते हैं। जापान में क्लास भी लेंगे, वो 2 क्लास लेंगे, 4 लेंगे, आज बच्चों को 7 बजे तक बिठाएंगे, आ जाओ जी। 2 दिन में सारी चीजें सीख होती हैं, धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। तो राइट और ड्यूटी। फिर लोग कहते हैं ऊपर से सिस्टम चलेगा, ऊपर वाले तो जहर बेचेंगे तो हम तो जहर नहीं पियेंगे। हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं ना। पड़ोसी तो कुएं में गिरेगा, कुएं में गिरे, जहर पिएगा, जहर पिए नहीं मानता तो हम उसके साथ तो नहीं खड़े होंगे, उसके साथ तो नहीं पिएंगे ना जहर। हम उसके साथ कुएं में छलांग तो नहीं लगाएंगे ना। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। और सब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है सिर्फ एनवायरमेंट के टीचर हैं या डिजास्टर का एक्सपर्ट है। एनवायरमेंट तो जैसे संजय ने कहा, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सिंपल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड भी सबसे है। आपको ये सीखना है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हुआ, तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट आ रहे हैं और गरीब आदमी ज्यादा मरेगा। नुकसान किन्होंने किया? जो एसी में बैठते हैं, सफारी में बैठते हैं, बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं। नुकसान तो उन्होंने किया, कार्बन फुटप्रिंट उन्होंने बढ़ाया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उन्होंने बढ़ाया, वाटर फुटप्रिंट उनकी वजह से बढ़े। बट मार पता है सबसे ज्यादा किस पे पड़ती है? गरीब पे, पुअर पे, लोअर मिडिल क्लास पे। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी वजह से दूसरे लोगों का नुकसान हो, दूसरे लोग पीड़ित हो, शोषण हो दूसरे लोगों का। वो हमारे यहाँ तो कहावत होती है, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो ना करें। मैं अच्छा नहीं कर सकता, मेरी फितरत नहीं है अच्छा करने की, किसी की भला करने की, तो एटलीस्ट मैं ये जरूर चाहूंगा मैं किसी का बुरा भी ना करूं। न्यूट्रल तो हम रह सकते हैं ना। आप लोगों को अवेयर नहीं करते, खुद तो खराब ना करो। वो आपने कहानी सुनी होगी गिलहरी की, जब श्री रामचंद्र जी चढ़ाई कर रहे थे लंका पे, तो समुद्र पे जब पुल बन रहा था तो बंदर जो पत्थर रख रहे थे, तो गिलहरी वहां समुद्र में डुबकी लगा के बाहर बालू का जो तट था उसमें लोटपोट होके वापस पत्थरों पे जाती और अपने आप को छिटकती, मिट्टी डालती। तो बंदर काफी हैरान होकर उसे देख रहे थे। तो एक बंदर ने उसको उठा लिया और पूछा क्या कर रही हो? बोला मैं पुल बना रही हूँ। तो वो बड़ा हंसा, वो रामचंद्र जी के पास ले गए उसको पकड़ के। तो रामचंद्र जी ने पूछा भी आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं पुल बना रही हूँ। तो बोला ऐसे कैसे पुल बनेगा? बोला मैं मिट्टी डाल रही हूँ, देख लो, अपने शरीर से मैं मिट्टी चिपकाती हूँ और वहां डाल के आ रही हूँ।
मतलब कल को जब भी नाम होगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो ये होगा गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था पुल बनाने में। तो श्री रामचंद्र जितने भावुक हुए, उन्होंने उसको हाथ में लेके, कहते हैं उसके जो पीठ पे जो हम निशान देखते हैं ना, हाथ पे रहा था, उससे उंगलियां बनी है। ये बच्चों को मोटिवेट करने की कहानियां बनी हुई हैं। झूठ सच का हमें नहीं पता, बट हमने पढ़ा है कहानियों में। तो हम कर क्या नहीं सकते? इतने लोग हैं हमारे कंट्री में जिन लोगों ने एनवायरमेंट के लिए इतना काम किया है, पूरी सरकार नहीं कर सकती, उन्होंने किया है। बलबीर सिंह सीचेवाल के बारे में बताया था गर्ग सर ने। अनिल अग्रवाल के बारे में अभी बता के गए, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है ना, जिन्होंने बताया था मैगी में पेस्टिसाइड है, मैगी में लेड है, आपकी कोक में पेस्टिसाइड है, पेप्सी में पेस्टिसाइड है। सीएससी के जो फाउंडर थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के, अनिल अग्रवाल, उसकी अब जो डायरेक्टर है सुनीता नारायण, सी इज ए लेडी। इंदिरा गांधी है, मेघा पाटेकर है, बलबीर सिंह सीचेवाल है, राजेंद्र सिंह है, रणजीत सिंह रणखोर हैं, कितने लोग हैं हमारे। और जो सबसे बात करते हैं आप लोगों के साथ, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो 1730 में हुआ था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, 363 पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ। वो बिश्नोई धर्म में कहते हैं अगर एक पेड़ को बचाने के लिए सर भी कट जाए तो भी सस्ता है। हम तो उस संस्कृति से आते हैं, और ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, बस विल पावर की जरूरत है। और टीचर वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे अपने पेरेंट्स का इतना नहीं मानते जितने बच्चे टीचर का मानते हैं, टीचर का जिनको इम्पैक्ट होता है। छोटे बच्चे को आप देख लो, अगर कुछ गलत मैडम करवा दे और घर पे मम्मी पापा कहेंगे तो मैडम ने गलत कर दिया, बच्चा नहीं मानता, बोले मेरी मैडम ने करवाया है। टीचर का इतना इम्पैक्ट होता है। आप कहोगे सर सिस्टम ऐसा हो गया, उसमें हम भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, सोसाइटी है, बट ये सोच के हम छोड़ नहीं सकते भी सिस्टम ऐसा है। हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा जहां तक हम कर सकते हैं, और जरूर चेंज आएगा। Yes, so all are requested to adopt sustainable lifestyle for environment, because we have only one earth, there is no other earth. Mahatma Gandhi rightly said, nature can provide everything to fulfill the need of a human being, but it can't fulfill the greed of a person. प्रकृति ने वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, बट हमारा लालच, और हम ही लालची हैं। आप पशु पक्षियों को देख लो, पक्षी दिन में निकलते हैं, दाना खा के रात को पेड़ों पे जाके छुप के सो जाते हैं, वो इकट्ठा नहीं करते, घर नहीं भरते। हम तो इतना इकट्ठा करते हैं, और भरोसा एक सेकंड का नहीं है। अब पहले हार्ट अटैक, हार्ट फेल की बात करते थे, 60s में होता था, अब तो 20 साल का 22 साल का रात को सोए हुए चले जाते हैं। और हम इतना पाप करते हैं, इतना इकट्ठा करते हैं, बट लालच का कोई अंत नहीं होता। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपने इन 15 दिनों में सीखा, इनमें से कुछ ना कुछ आप जरूर शुरू करें। और अब अपने कॉलेज में आप कंपोस्ट पिट बनाना चाहते हो, कंपोस्टिंग शुरू करनी है, हम यहाँ हैं। जब भी आपको लगता है आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, ऐसे ही सिस्टम बनता है, कारवां बनता है। थैंक यू सर। हमने पॉलिथीन बैग लेना बंद कर दिया सर, मैंने। गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैं मार्केट में जब सामान लेने जाता हूँ ना, मैं गोहाना जाते हैं हम सामान लेने, सब्जी फ्रूट लेने जाता हूँ गोहाना, तो मैं एनवायरमेंट का टीचर हूँ। मेरे घर पे मैं ये नहीं कहता पॉलिथीन नहीं आता, इमरजेंसी में आता है। बाई चांस मैं बिना किसी असाइनमेंट के अचानक मैं कहीं गया और घर से मैसेज आएगा भी ये सामान लेके आना, तो मैं इमरजेंसी में पॉलिथीन खरीदूंगा मेरे पास अगर कुछ नहीं है। नहीं, मैं गाड़ी में अपने थैले रखता हूँ, स्कूटर पे अपने थैले रखता हूँ, और विद इन कैंपस में गाड़ी यूज नहीं करता। विद इन कैंपस में पैदल चलता हूँ, और जरूरत हो तो स्कूटर यूज कर लेता हूँ। लोग मजाक भी करते हैं, बोले आप प्रोफेसर हो के आप स्कूटर यूज करते हो। मैं क्या फर्क पड़ता है कि उस स्कूटर का फ्यूल कंजम्पशन कम है, कार्बन फुटप्रिंट कम है, गाड़ी का कार्बन फुटप्रिंट भी ज्यादा है, और आपको 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर के लिए गाड़ी का मेरे को लगता कुछ बनता है, तो मैं पैदल भी चलता हूँ अंदर अपने कैंपस में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बड़ी बहुत काम आती हैं। सबसे बड़ा तो आपका फ्यूल है, एनवायरमेंट, तीसरा आपकी हेल्थ। आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप दिन में अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल लो डेली, अपने काम पैदल घूम के करते हो,
तो आपको जिम वाले को पैसे नहीं देने, आपको डॉक्टर को पैसे नहीं देने। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है। और जो कॉलेज में जितने भी टीचर हैं, आप कॉलेज में अपना इको क्लब बनाएं, बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे करते हैं, वहां उनकी आप इवेंट करवाएं। अरे कुछ लोग पता है क्या कह देते हैं, सरकार फंड नहीं देती। मैंने वो टाइम देखा जब पेड़ के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे, चौक के पैसे नहीं होते थे, टीचर अपनी सैलरी में से पैसे इकट्ठे करके लाते थे, आज से 30 साल पहले। अब तो हमें इतनी हैंडसम सैलरी मिलती है। छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हम कंट्री भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, और हमने ये धरती अपने पूर्वजों से उधार ली है। ये अमेरिकन कहावत है एक, ये धरती हमने अपने पूर्वजों से उधार ली है, और जो चीज उधार लेते हैं वो हमें वापस करनी होती है। वापस हम किसे करेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन को। आने वाली जनरेशन को हम एटलीस्ट ऐसा तो देखे जाए ना, वो रह सकें, सांस ले सकें, पानी पी सकें, खाना खा सकें, प्रकृति को देख सकें, ऐसा तो छोड़ के जाए ना। हमने कैसे ली थी? अगर आज से 40 साल पहले की बात करते हैं, कितना वो होता था, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता था। मैंने बारिश वो देखी है, उस टाइम तो गैस भी नहीं होते थे। मैंने देखा वो टाइम 20-20 दिन सूरज नहीं निकलता था, तब भी बाढ़ नहीं आती थी, लोग डूबते नहीं थे। क्यों? गांव में तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, हमने सारी पाट दी, हर जगह कब्जा कर लिया। 15 दिन 20 दिन सूरज नहीं निकलता था, इतनी पानी गिरता था। आज तो अगर 15 दिन बारिश हो जाए तो देश डूब जाए। तो किसने किया? हमने किया। तो हम सबका रोल है, जो एथिक्स की बात करते हैं, लिव एंड लेट लिव। धरती अकेले मनुष्य की नहीं है, दूसरे जीवों की भी है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे पीछे किसी लेक्चर में, हमने उनके घर पे कब्जा किया है, पशु पक्षियों के सब चीजों पे। उन्होंने नहीं किया, हमारे, हमने इन्वेड किया है। वो इन्वेड नहीं करते हमारी टेरिटरी में, हमने फॉरेस्ट खत्म किए हैं। और जब बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम भुगत रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेगी। ये डेफिनेट है, जो बोया वो काटना पड़ता है। प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, विद इंटरेस्ट हमारे पास वापस आ रहा है। अब हमारे पास कितनी फैसिलिटी बढ़ गई, मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, हमारी जो एवरेज लाइफ है कम हो गई। मैं अभी जो आपको बता रहा था, कैंसर का, हार्ट अटैक का, डिप्रेशन का, कितनी चीजें थी जो पहले नहीं थी। अब देख लो कितना प्रेशर है हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन पे, हमारी फैमिली पे, हम चीजों हम पे। तो अच्छा करें चाहे थोड़ा करें, अपने आप को चेंज करें, जो आप कर सकते हैं। पड़ोसी जहर पी रहा है, नहीं मानता, पीने दो उसे, मर। मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो जो अच्छा वो करूंगा। और आप तो पूरी वर्क फोर्स तैयार कर सकते हैं। हम तो जो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, बच्चे हैं, उनके साथ कितनी फोर्स तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए 1991 में MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में PI डाला था, वी हैव ओनली वन अर्थ, ओनली वन एनवायरमेंट, वेयर विल आवर फ्यूचर जनरेशन गो। उनके लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन जो 1991 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली थी, जोगिंदर सर डिटेल में पढ़ना इसके पीछे क्या कहानी थी। उनको पद्मश्री मिला था। एक ग्रीन लॉयर हैं कुलदीप सिंह, ग्रीन जज कुलदीप सिंह, ग्रीन लॉयर MC मेहता, उनकी बदौलत ये पेपर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपके भी पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि एनवायरमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप कर सकते हैं अपनी टीम बना के चलें, करें, इको क्लब बनाएं, गांव में, पड़ोस में, घर में, जो कर सकते हैं जरूर करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, वो कहावतें हैं ना, अपने लिए सब जीते हैं, मजा तब है किसी और के लिए जिए। और प्रकृति किसी और के लिए नहीं, प्रकृति सबके लिए है। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सबके बच्चे, वो इसी प्रकृति में सांस लेंगे, इसी में पलेंगे, इसी में बढ़ेंगे। पीछे AQI इतना ज्यादा था, दिल्ली में स्कूल बंद किए थे, कॉलेज बंद किए थे, बच्चे घरों में कैद हो गए थे, देश की राजधानी में। हम ऐसा चाहेंगे हमारे सारे देश में ऐसे गैस चैम्बर बन जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो अब मीनाक्षी मैम कह रहे थे 1 डे कार फ्री डे। कार फ्री डे तो बड़ा आसान काम है, आप वो करके देखो, तब माने जब आप कार पूलिंग की बात करते हैं, एक जगह से इकट्ठे आते हैं।
आज मीनाक्षी मैडम गाड़ी लेके चलेंगे, कल जोगिंदर सर लेके चलेंगे, परसों नोरमा मैडम लेके चलेंगे। मैं तो सर जाता ही नरेश सर के साथ कॉलेज में, तो आसपास है इकट्ठे, उसमें क्या है? पैसा इतना है, एक के घर में 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी है, कोई नहीं जाके कुछ दूसरे के साथ कि मैं नरेश सर के साथ जाता हूँ कॉलेज में। सर नहीं, आप गाड़ी में आते हो अलग से? नरेश सर के साथ जाता हूँ, नरेश सर के साथ आता हूँ। आप गाड़ी में आते हो? नरेश सर मेरे यहाँ लेटस मेरे यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में सोनीपत से, पानीपत से और रोहतक से इट मैक्सिमम लोग अप डाउन करते हैं, और उनमें से मोर देन 60% टीचर कार पूलिंग करते हैं। मैंने 60% कहा है, मैंने 100 नहीं कहा, 60% कार पूलिंग करते हैं। तो अगर आसपास रहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? वही एटीट्यूड की बात है ना, मैं उससे क्यों पूछूं, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? अब इसमें पॉपुलेशन है, इसमें पॉल्यूशन है, या इसमें एटीट्यूड है? मेरा एटीट्यूड है, मैं उसकी गाड़ी में क्यों जाऊं? मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मैं उसके साथ क्यों बैठूं? ये हमारा एटीट्यूड है ना? तो इतना कह के मैं वाइंड अप करूंगा। बाकी आपने कुछ शेयर करना, आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यू। यस सर। यस संजय सर, टोनी सर। यस सर, जो भी प्रेजेंटेशन किया है ना रिसोर्स पर्सन ने, उसका पीपीटी मिलेंगे क्या हम लोग को? रिसोर्स पर्सन ने प्रेजेंटेशन अपने सिस्टम से किया था, उनके पास था, अपने पास उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया। हम उनको मेल डाल देंगे, अगर वो हमारे को देंगे तो मैं इसी ग्रुप में, अभी इस ग्रुप को हम बंद नहीं करेंगे, इसी ग्रुप में मैं डाल दूंगा और आप टच में रह सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है। यू फील फ्यूचर यूज में काम आएगा ना सर, इसीलिए। यस, फ्यूचर यूज में काम आएगा इसीलिए। yes, you have my email address, I will share my all detail in the group, we will remain in touch in future। तो आप अपने यहाँ इस तरह की एक्टिविटी करें, करवाएं, बच्चों को जोड़ें। हम जब पढ़ते थे, 90s की बात करते हैं, 85 की, उस टाइम तो पोल्यूशन नहीं था। उस टाइम स्कूल में टीचर प्लांटेशन करवाते थे, जोगिंदर सर आपने भी लगाए होंगे, स्कूलों में पेड़ लगवाते थे। उस टाइम तो पोल्यूशन नहीं था, उस टाइम डिफोरेस्टेशन भी नहीं था। अगर मैं 1980 की बात करूं, उन्हें पता था क्या महत्व है पेड़ों का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। आज भी स्कूल में हमारे लगाए हुए पेड़ खड़े हैं, एक दो। हम पेड़ लगा देते हैं, उसकी केयर नहीं करते। पेड़ लगाने के बाद 3 साल उसकी केयर जरूरी है, एटलीस्ट 3 ईयर। When any plant attain 3 years age, then you may leave it. It will survive itself. फिर तो उसकी जड़ें अपने आप पानी खींच लेंगी, मिट्टी से अपने आप वो कर लेंगे न्यूट्रिएंट पूरा। 3 साल तक केयर करनी होती है। लोग क्या करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं, कट्ठे मास स्केल पे पेड़ पौधे लगा दिए, उनकी केयर नहीं, वो खत्म। चाहे एक लगाएं, उसको 3 साल तक केयर दें बच्चे की तरह। आपने एक लगा दिया तो वो भी बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूं इससे आसान काम नहीं है पर्यावरण के लिए, खाली पेड़ ही लगा दो, जितने पेड़ आप लगा सकते हो। इससे आसान काम एक तो पेड़ लगा लो, और एक पॉलिथीन प्लास्टिक कम कर लो, बंद कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इतना भी कर दोगे ना योगदान, आम आदमी इतना भी योगदान कर देना, हम सोच भी नहीं सकते उसका कितना बेनिफिट होगा। Yes, please, now if you want to discuss anything, house is open for discussion. Yes. मैं मैडम ऋतुजा को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऋतुजा मैम। Yes, Tony sir, speak up. Is your weather warm out there? Here we are experiencing colder. Yes, the weather is warm, very warm, hot.
Okay, I was just seeing the silly, that's why. Yes, yes. I couldn't. Good observation. On your camera. Whole planet. On your camera. Sir, actually, I'm not feeling well today. So, So this is the vastness What's of your native place? I'm from Kolhapur, sir. Okay, Kolhapur. हाँ, कोल्हापुर में से एक छोटा सा गांव है पेड़ पड़गांव करके, वहां से मैं हूँ. वहाँ तो ह्यूमिडिटी बड़ी, कोल्हापुर भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है मुंबई और उसकी तरह. क्या कम होती है ह्यूमिडिटी? हाँ है. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. सर आप म्यूट में हैं. भूपेंद्र सर, Yes, अभी thank जो you. सर वो अभी कोर्स चल रहा है, सो अभी ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या वो